चलो मार्कर और है, ठीक है। Good morning, students. Our topic of discussion for today is branch audit. In the previous chapters, we have covered the provisions of an company auditor, and we covered that a company auditor is appointed under section 224. Now, the concept of branch audit we have to cover, and in section 224 we have studied that a company may appoint auditor or auditors. So more than one person may be appointed as the auditor. In this reference, our topics for today is branch audit, joint audit, special audit, and cost audit. ये चार topics we need to cover today: branch audit, joint audit, special audit, and cost audit. After doing these topics, we will cover our chapter number 7. This is the last part of the chapter number 7, and we can say we have complete near about 20% to 25% of the syllabus, जिसके अंदर चैप्टर 7 में हमने पहले स्टडी किया था कंपनी ऑडिटर, उसकी अपॉइंटमेंट, रिमूवल, क्वालिफिकेशन, डिसक्वालिफिकेशन, पावर्स, ड्यूटीज, टाइप्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट्स एंड द प्रोविजंस ऑफ द कारो. नाउ द टॉपिक्स. फर्स्ट, we start with the branch audit. The first question arises: who can be the branch auditor? Section 228 कंपनी ऑडिटर हिमसेल्फ, जो कंपनी ने मेन ऑडिटर को अपॉइंट किया, मींस कंपनी ऑडिटर को, कंपनी ऑडिटर में आल्सो वर्क्स एज द ब्रांच ऑडिटर. एनी पर्सन क्वालिफाइड अंडर सेक्शन 226. यदि कंपनी मेन ऑडिटर को ब्रांच की ऑडिट नहीं देना चाहती, इन दैट केस company may appoint any other person who is duly qualified under section 226. And which persons are qualified under section 226? Chartered accountant holding certificate of practice. So any person may be appointed as the branch auditor provided he is qualified under section 226. Third, in case of a foreign branch,
foreign branch के केस में which persons can be the auditor? Company auditor, person qualified under section 226, and any accountant qualified under foreign law. जिस कंट्री में फॉरेन ब्रांच है उस कंट्रीज के फॉरेन लॉज की अकॉर्डिंग जो अकाउंटेंट वहां पर क्वालिफाइड ऑडिटर्स बन सकते हैं, दैट पर्सन मे बी अपॉइंटेड एज द ब्रांच ऑडिटर. सो इट इज आवर फर्स्ट एस्पेक्ट हु कैन बी द ऑडिटर. 3 persons. First one, company auditor himself. Second one, any person qualified under section 226. And third one, in respect of a foreign branch, the company auditor himself or a person qualified under section 226 or any accountant duly qualified under the law of the foreign country can be appointed as the auditor. Now, the second one aspect, appointment. Who will appoint the company auditor? Company auditor may be appointed either by the company in general meeting. Branch auditor की appointment that can be made by the company in general meeting, or company may authorize board of directors to appoint the branch auditor in consultation with company auditor. Branch auditor may appoint the branch auditor. Board of directors may appoint the branch auditor, but in consultation with the company auditors. Now, that is about the कि कौन सा person branch auditor हो सकता है, and second one, उसकी appointment कौन करेगा. The first aspect, who can be the branch auditor? The company auditor himself, any person qualified under section 226, or in respect of a foreign branch, the company auditor himself, or any person qualified under section 226, or in respect of a foreign branch, the foreign laws की according जो person qualified है उस country में to be appointed as an auditor, that person can work as the branch auditor. After that we covered उसकी appointment कौन करेगा. Appointment of the branch auditor will be made either by the company in general meeting, or company may authorize the board of directors to appoint the branch auditor, but in consultation with the company auditor. Now, company auditors के right in relation to branch audit. ब्रांच ऑडिट की रिलेशन में कंपनी ऑडिटर के राइट्स क्या हैं? वी हैव अर्लियर कवर्ड दैट कंपनी ऑडिटर्स हैज 2 राइट्स इन रिलेशन टू द ब्रांच ऑडिट. नंबर 1, he can visit the branch office.
not audited by him. जिस ब्रांच को कंपनी ऑडिटर ने ऑडिट नहीं किया, कंपनी ऑडिटर हैज ए राइट टू विजिट द ब्रांच ऑफिस. एंड नंबर 2, simultaneously he has a right of access to all books, accounts and vouchers that is maintained at the branch. जो भी बुक्स, अकाउंट्स, वाउचर्स ब्रांच में मेंटेन्ड है, उनकी असेस कंपनी ऑडिटर के पास है. सो कंपनी ऑडिटर हैज 2 राइट्स इन रिलेशन टू द ब्रांच ऑडिट when he does not conduct the branch audit himself. Number 1, he has a right to visit the branch office which has not been audited by him. And number 2, he has a right of access to all the books, accounts and vouchers that has been maintained at the branch. The next one is right of branch auditor. ब्रांच ऑडिटर के राइट्स, ब्रांच ऑडिटर की ड्यूटीज क्या हैं? नंबर 1, branch auditor has same powers and duties as the company auditor has. जो पावर्स एंड ड्यूटीज कंपनी ऑडिटर की हैं, वही सेम पावर्स एंड ड्यूटीज ब्रांच ऑडिटर की हैं, बट इन रिलेशन टू द ब्रांच ओनली, सिर्फ ब्रांच के रिलेशन में. बट मेजर एक्सेप्शन इज दैट द ऑडिट रिपोर्ट will be submitted to the company auditor. Branch auditor will submit his report to the company auditor, and company auditor is required to incorporate the branch auditor report into the main audit report. Remuneration. Branch auditor is entitled to the remuneration that has been fixed by the company in general meeting, provided company ने जनरल मीटिंग में ब्रांच ऑडिटर को अपॉइंट किया है तो. बट इफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैज अपॉइंट द ब्रांच ऑडिटर, देन द रेम्यूनरेशन विल बी डिसाइडेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. दिस इज अबाउट द राइट्स ऑफ कंपनी ऑडिटर एंड राइट्स ऑफ ब्रांच ऑडिटर. Now the next aspect, exemption of branch audit. Under section 228 subsection 4, central government has been given power that they can frame the rules for giving exemption of the branch audit to a company based on quantum of activity, कि लाइक ब्रांच की एक्टिविटी बहुत स्मॉल एक्टिविटीज है, बड़े लो लेवल पर, स्मॉल स्केल लेवल पर उस ब्रांच की वर्किंग है. इन दैट केस द कंपनी, द सेंट्रल गवर्नमेंट में एग्जम्प्ट द audit of branch based upon the quantum of activity. The another reason, no qualified person is available at reasonable cost. Reasonable cost पर
कोई भी क्वालिफाइड पर्सन अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट वन, कंपनी हैज मेड द अरेंजमेंट फॉर checking of accounts by a competent person। कंपनी ने अरेंजमेंट्स किए हैं फॉर चेकिंग ऑफ द अकाउंट्स बाय द ए कंपिटेंट एंड द रिस्पॉन्सिबल पर्सन और एनी अदर रीजन। सो under section 228 subsection 4 it has been provided that central government may frame the rules for giving exemption, granting exemption to a company to get their accounts maintained at the branch audited in the following circumstances. One is based upon quantum of activity. Number two, based upon the reasonable cost that company has to incur to get the branch accounts audited, but no person is available, कोई person available नहीं है। Arrangements are made for checking the accounts by a responsible and the competent person, and fourth one, any other reasons। इन चारों में से कोई भी reason है, any other cause is there which the central government is satisfied कि इन सर्कमस्टांसिस में ब्रांच ऑडिट को एग्जम्प्ट कर देना चाहिए, देन द सेंट्रल गवर्नमेंट मे फ्रेम द रूल्स फॉर प्रोवाइडिंग द फॉर ग्रांटिंग द एग्जम्पशन ऑफ द ब्रांच ऑडिट, एंड अकॉर्डिंगली सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी इन पावर्स को यूज करते हुए कंपनीज ब्रांच ऑडिट एग्जम्पशन रूल्स 1961 को फ्रेम किया है। सो दैट इज अबाउट सेक्शन 228 सेक्शन जिसे हमने स्टडी किया। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक, it is about company's branch audit exemption rules, but इस exemptions rules को start up करने से पहले let's have an outlook way of the section 228। section 228 subsection 1, what it says, that is who can be branch auditor। that we have covered already। 3 persons, number 1 a company auditor, number 2 any person qualified under section 226, and third one, in respect of a foreign branch, one more person is authorized to carry out the branch audit, and that is any accountant qualified under the law of the foreign country can also be appointed as the branch auditor। section 228 subsection 2 that we have covered, that is rights of company auditor। company auditor के rights in relation to the branch audit, 2 rights are there। number 1, the company auditor can visit any of the branch office, and number 2, he has an access to all the books, accounts, vouchers that has been maintained at the branch office of the company। appointment, rights and duties
of branch auditor. Keep in mind the difference between section 228 subsection 2 and 228 subsection 3. Under the section 228 subsection 2, the company auditor's rights are covered in relation to the branch audit, and under section 228 subsection 3, the rights of branch auditor are concerned in relation to the branch audit. And appointment may be made by either by the company in general meeting itself or by the board of directors, provided the company has authorized the board of directors to appoint the branch auditor, and in such case the board of directors will appoint the branch auditor but in consultation with the company auditor. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को ऑथराइजेशन नंबर 1 कंपनी से मिलेगी, नंबर 2 वो ब्रांच ऑडिटर को अपॉइंट करेंगे बट ओनली आफ्टर इन कंसल्टेशन विद द कंपनी ऑडिटर्स. राइट्स एंड ड्यूटीज दे आर सेम एज लाइक ऑफ द कंपनी ऑडिटर but in a relation to the branch only, and they are required to submit their report to the company auditor in spite of the members of the company. Section 228 subsection 4. 228 subsection 4 is की exemption. ब्रांच ऑडिट की एग्जम्पशन कब ग्रांट हो सकती है और अकॉर्डिंगली द पावर हैज बीन गिवन टू सेंट्रल गवर्नमेंट. सेक्शन 228 सबसेक्शन 4 ने सेंट्रल गवर्नमेंट को यह पावर दी है कि इन केस यदि सेंट्रल गवर्नमेंट सेटिस्फाइड है विद द सर्कमस्टांसेस लाइक ऑडिटर अवेलेबल नहीं है रीजनेबल कॉस्ट पर, कंपनी ने अरेंजमेंट किए हैं फॉर गेटिंग द अकाउंट्स checked by a competent and responsible person, or for any other reason, central government may frame the rules for exemption of the branch audit. Now a question arises, क्या सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी इन पावर्स को यूज किया? आंसर इज यस, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी इन पावर्स को यूज किया. देन कौन से रूल्स बनाए? दे आर कंपनीज branch audit exemption rules. (1961). ठीक. नाउ अब हमें इस केस में कि ब्रांच ऑडिट के एग्जम्पशन रूल्स क्या हैं, इन चीज को स्टडी करना है. ब्रांच ऑडिट के एग्जम्पशंस के लिए दो मेन रूल हैं हमारे पास. फर्स्ट, नोट डाउन दीज सेक्शंस. ब्रांच ऑडिट के रेफरेंस में ये चार मेन सेक्शंस हैं. नंबर 1, 228 सबसेक्शन 1, 228 सबसेक्शन 2, सबसेक्शन 3, सबसेक्शन 4. सबसेक्शन 1, who can be the branch auditor. Subsection 2, rights of company auditor in relation to branch audit. Subsection 3, appointment of branch auditor, rights of branch auditor, duties of branch auditor. Subsection 4, power of central government to exempt any branch for carrying out the audit. किसी भी ब्रांच की एग्जम्पशन के लिए, ऑडिट की एग्जम्पशन के लिए उसके रूल्स को फ्रेम्ड आउट करने की पावर दैट हैज बीन गिवन टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, एंड अकॉर्डिंगली सेंट्रल गवर्नमेंट हैज यूज्ड देयर पावर and framed the company's branch audit exemption rules 1961. Now we start with this branch audit exemption rule कि किन situations में किस quantum of activity पर branch audit की exemption allowed होती है.
there are two main rules based upon which the exemption from the branch audit is allowed. First one, Rule 3. Rule 3 is an general exemption based upon quantum of activity. Rule 4, exemption based on application by company. Rule 3 में general exemption is allowed to every company engaged in manufacturing, trading or processing activities. What is that? Number 1. This exemption is available to companies which are engaged in manufacturing, processing and trading activities. जो कंपनीज इन एक्टिविटीज में एंगेज्ड है उन कंपनीज को ये एग्जम्पशन अलाउड है. एंड व्हाट इज द एग्जम्पशन? उसके लिए क्वांटम ऑफ एक्टिविटी कितनी है? इन केस average quantum of activity is less than higher of rupees 2 lakhs or 2% of total turnover of the company, including its branch offices. यदि ब्रांच की एवरेज क्वांटम ऑफ एक्टिविटी इट इज लेस देन हायर ऑफ ₹2 lakh और 2% of the total turnover of the company, including all its branches, then branch is not required to carry out the audit. Say for example, यदि हम इस चीज का एक एग्जाम्पल लें यहां पर कि कंपनी की क्वांटम ऑफ एक्टिविटी ब्रांच की टर्नओवर 1.9 लाख, ब्रांच की टर्नओवर 1.9 लाख, कंपनी की टोटल टर्नओवर लेट्स से 100 lakhs. Now, first we have to find out average quantum of activity. Quantum of activity that is for the branch. ब्रांच की क्वांटम ऑफ एक्टिविटी है 1.9 लाख. वेदर इट इज लेस देन और हायर टू और इक्वल टू, ये अब हमें फाइंड आउट करना है. किसके साथ कंपेयर करना है? हायर ऑफ ₹2 lakhs और 2% ऑफ द टोटल टर्नओवर. कंपनी की टोटल टर्नओवर 100 lakhs, इसका 2% 2 lakhs or 2 lakh, whichever is higher, it is equal, that is ₹2 lakhs. So in this case, quantum of activity 1.9 lakh is less than ₹2 lakh. As a result,
the branch audit is exempted. Company is not required to carry out the branch audit. General exemption is there. If we change the values, let's say branch turnover rupees 4 lakhs. Company turnover 500 lakhs. Then same वही चीजें हमें फाइंड आउट करनी है. नंबर 1, कंपनी की एवरेज क्वांटम ऑफ एक्टिविटी ब्रांच के लिए, दैट इज 4 lakhs. Is it less than higher of rupees 2 lakh or 2% of the total turnover of company? 2% of total turnover. Turnover is 500 lakhs. 500 lakhs का 2% 10 lakh. 10 lakh or rupees 2 lakh, whichever is higher, 10 lakh. Is the 4 lakh is less than rupees 10 lakh? Yes. Branch audit exemption allowed. But suppose कंपनी की टर्नओवर इट इज रुपीज 150 lakhs. कंपनी की टर्नओवर टोटल 150 lakhs की है. देन वी हैव टू फाइंड आउट हायर ऑफ रुपीज 2 lakh और 2% ऑफ द टोटल टर्नओवर. टोटल टर्नओवर 150 lakh, 150 lakh का 2%, दैट इज 3 lakh. 3 lakh और 2 lakh, whichever is higher, 3 lakhs. क्या 4 lakh 3 lakh से कम है? No. Result, no exemption is allowed. That is one simple provision as per Rule 3 of Companies Branch Audit Exemption Rules 1961. And accordingly, the Rule 3 provides that this is available only to the manufacturing, processing and trading activities, and the provision is कि if the average quantum of activity is less than higher of rupees 2 lakh or 2% of the total turnover of the company, including all its branches and earning from the services or any other income, सबको मिलाकर कंपनी की टर्नओवर का 2% और रुपीज 2 lakh, whichever is higher, that we needs to taken care. Now the question arises कि what meant by this term quantum of activity and what meant by the term average. First, quantum of activity. That is taken higher of 3. Number 1, value of goods sold and services provided. जो गुड्स हमने सोल्ड किए हैं ब्रांच ने और सर्विसेज प्रोवाइड की हैं, उनकी वैल्यू, या फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड, जो गुड्स हमने प्रोड्यूस किए हैं उनकी कॉस्ट, या एक्सपेंडिचर incurred during the year, may be revenue or capital, कोई भी, anyone, revenue as well as capital. इन तीनों का higher, that is termed as the quantum of activity. So, quantum of activity is the higher of the 3. Number 1, value of goods and services provided. Number 2, cost of the goods produced. And number 3 is the expenditure incurred. Expenditure include revenue as well as
the capital expenditure. That is first aspect, quantum of activity. The second one aspect is average. The average one is, the average, it should be taken for 3 preceding financial years. जो 3 preceding financial years हैं, उसका एवरेज हमें लेना पड़ता है. और preceding financial year किसके? जिस फाइनेंशियल ईयर की ऑडिट हम कैरी आउट कर रहे हैं, उससे preceding 3 फाइनेंशियल ईयर्स. नंबर 2, लेकिन यदि 3 फाइनेंशियल ईयर हुए ही नहीं हो उस ब्रांच को, देन 2 preceding फाइनेंशियल ईयर्स. बट यदि 2 preceding फाइनेंशियल ईयर भी नहीं हुए हैं अब तक, सिर्फ preceding फाइनेंशियल ईयर्स, branch is entirely new. In that case, current year के expected, जो current year की expected थी, उसकी वैल्यूज कि कितनी हम quantum of activities expect कर रहे हैं. So, this is about the rule 3 of company's branch audit exemption rules, which says that this provision is applicable only to the manufacturing, processing और the trading companies. जो companies manufacturing में, processing में and trading activities में engaged है, उन companies के ऊपर ये provision applicable होगा. And provision क्या है कि whereby average quantum of activity, the thing that we should remember is number 1 average and number 2 is the quantum of activity. If the average quantum of activity of the branch is less than, only less than, यदि ये equal to है, ठीक, यदि यहां पर ये average quantum of activity, if it is equal to or it is greater than, equal to or greater than है, no exemption is allowed. Exemption is allowed only when the average of quantum of activity, it does not exceed the higher of rupees. Listen one thing, equal पर ये apply होगा. If it is less than or equal to, less than or equals to, ठीक, यदि average quantum of activity does not exceed, the language is does not exceed higher of rupees 2 lakh or 2% of the total turnover, in that case exemption is allowed. But if average quantum of activity is higher than, no exemption is allowed. If it is less than or equal to higher of rupees 2 lakh or 2% of the turnover of the company as well as branch, then the exemption is allowed. But if it is greater than this figure, then no exemption is allowed. So, in this case, we needs to find out quantum of activity. Quantum of activity we take as the aggregate value of goods or articles that has been produced or the value of the services that has been provided. And number 2, then is the number 2 that we have taken is the cost of the goods produced or the cost of services rendered. And number 3, aggregate expenditure that covers capital expenditure as well as the revenue expenditure. And second aspect is we needs to take the average. Average in case यदि 3 फाइनेंशियल ईयर्स है, लेट्स से हम ऑडिट कर रहे हैं फॉर द ईयर
8-9 के लिए हम ब्रांच ऑडिटर अपॉइंट हुए हैं, 8-9 के लिए। इन केस क्या 8-9 में हमारी जो ब्रांचेज हैं इस कंपनी की, जिसके हम कंपनी ऑडिटर हैं, उनकी ऑडिट होनी है या नहीं होनी? क्या 8-9 से पहले 3 इयर्स, 5-6, 6-7, 7-8, इन तीनों सालों की क्वांटम ऑफ एक्टिविटी का एवरेज हमें लेना है। बट सपोज 5-6 में ये ब्रांच ही नहीं थी, then we needs to take the average of 6-7 and 7-8. Again 6-7 में भी ये ब्रांच नहीं है, then we have to consider the quantum of activity for the year 7-8. But 7-8 में भी ये ब्रांच नहीं थी और ये ब्रांच बनी ही कब है? इन द ईयर 8-9. देन 8-9 की करंट ईयर की फिगर यदि हम बिगिनिंग में ही देख रहे हैं, लेट्स से ऑडिटर अपॉइंट हो जाता है ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, तो फाइनेंशियल ईयर के अंदर एंड तक 2009 तक एक्सपेक्टेड टर्नओवर कितनी आएगी, दैट वी नीड्स टू कंसीडर। सो दैट इज अबाउट द एवरेज क्वांटम ऑफ एक्टिविटी which is covered by rule number 3. Now the next is rule number 4, that is exemption in other cases. This is the general exemption which is available to every company. हर एक कंपनी को अवेलेबल है, प्रोवाइडेड ये दोनों कंडीशंस पूरी हो रही हैं तो। बट इफ एनी ऑफ दीज कंडीशंस इज नॉट सेटिस्फाइड, इन दैट केस हम कंपनी की तरफ से, कंपनी कैन मेक एन एप्लीकेशन टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट on the basis of application and after conducting the inquiry, it is of the opinion that no qualified person is available at reasonable cost उस प्लेस पर जहां पर ये ब्रांच सिचुएटेड है, कोई भी पर्सन ठीक जो क्वालिफाइड है वो अवेलेबल नहीं है एट द रीजनेबल कॉस्ट, और कंपनी हैज मेक द अरेंजमेंट्स, कंपनी ने अरेंजमेंट किए हैं टू गेटिंग दीज अकाउंट्स चेक्ड बाय ए पर्सन हु इज कंपिटेंट एंड रिस्पॉन्सिबल। कंपनी ने इस चीज को इंश्योर किया है कि ये अकाउंट्स ऑन एन पीरियोडिक बेसिस रिव्यू होंगे, चेक होंगे बाय ए कंपिटेंट एंड द रिस्पॉन्सिबल पर्सन, और कंपनी हैज अपॉइंट एन ऑडिटर दो ही इज कंपिटेंट but an employee of the company. कंपनी का एम्प्लॉय है ठीक, लेकिन यदि ये कंपनी का एम्प्लॉय नहीं होता तो ये क्वालिफाइड होता, बिकॉज सेक्शन 226 सबसेक्शन 3 में हमने स्टडी किया था कि दैट एनी पर्सन हु इज एन ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, जो पर्सन कंपनी का ऑफिसर या कंपनी का एम्प्लॉय है, वो पर्सन कंपनी में एज एन ऑडिटर अपॉइंट नहीं हो सकता। सो इन दिस केस कि कंपनी ने अपने एक एम्प्लॉय को ऑडिट असाइनमेंट दी है कंपनी की ब्रांच की, लेकिन बीइंग एन एम्प्लॉय दैट पर्सन कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर लॉफुली बिकॉज ऑफ डिसक्वालिफिकेशन अंडर सेक्शन 226 एंड हेंस अदरवाइज यदि वो पर्सन एम्प्लॉय नहीं होता देन ही वाज ए कॉम्पिटेंट पर्सन टू एक्ट एज एन ऑडिटर। So central government after conducting an
इंक्वायरी इफ इट इज सेटिस्फाइड कि इनमें से कोई भी रीजन एग्जिस्ट करता है और एनी अदर रीजन। ठीक, यदि सेंट्रल गवर्नमेंट सेटिस्फाइड है इन रीजन्स के साथ, देन सेंट्रल गवर्नमेंट may pass an order in writing for the exemption of branch audit. That is the rule number 4. So, under the company's branch audit exemption rules 1961, दो rules main है. One is rule number 3, that is an general exemption available to all the persons based upon quantum of activity, and second one is rule number 4, which is available to other persons provided general exemption is not available, then they can make an application to the central government specifying the reasons जिनके basis पर वो branch audit की exemptions को चाहते हैं, and central government in these circumstances, after carrying out their detailed investigation, having regard to the quantum of activity, having regard to the reasonable cost at which the auditor availability is there, having regard to the arrangements made by the company, जो कंपनी ने अरेंजमेंट्स किए हैं उनको रिगार्ड देते हुए, इफ सेंट्रल गवर्नमेंट इज ऑफ द ओपिनियन कि इसे इस कंपनी की ब्रांच को ब्रांच ऑडिट के प्रोविजन से एग्जम्प्ट किया जाए, दे में पास एन ऑर्डर एग्जम्प्टिंग द कंपनी टू गेट द ब्रांच अकाउंट्स ऑडिटेड. That is about this branch audit concept. इस केस में यदि हम कुछ एग्जाम्पल्स लेकर चलें इनके, if we take some examples कि एक कंपनी, नंबर 1, एक कंपनी, उसका हेड ऑफिस दिल्ली में है. इट हैज द 3 ब्रांचेस, वन इन मुंबई, वन इन कोलकाता, वन इज इन चेन्नई. एक कंपनी, हेड ऑफिस दिल्ली में, 3 ब्रांचेस मुंबई, कोलकाता एंड चेन्नई. पूरे ग्रुप की टर्नओवर, हेड ऑफिस प्लस ब्रांच, इसकी टोटल टर्नओवर है लेट से 250 लाख. कंपनी एज वेल एज ऑल इट्स ब्रांचेस. Now, कोलकाता ब्रांच इसकी क्वांटम ऑफ एक्टिविटी हम कोलकाता ब्रांच की क्वांटम ऑफ एक्टिविटीज की बात कर रहे हैं, लेट्स से लास्ट 3 इयर्स की. क्वांटम ऑफ एक्टिविटी में 3 चीजें आएंगी. नंबर 1, वैल्यू ऑफ गुड्स सोल्ड और सर्विसेज प्रोवाइडेड. नंबर 2, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और सर्विसेज रेंडर्ड. एंड नंबर 3, एक्सपेंडिचर ऑफ एनी नेचर, मे बी रेवेन्यू और कैपिटल. लेट्स से कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड, दैट इज 6 lakhs. Cost of goods produced, value of goods sold, जो गुड्स उन्होंने सेल किए वो, $7 lakhs. Expenditure, revenue as well as capital, let's say
6.5 lakhs ऑन एन एवरेज बेसिस। ये एवरेज लिया है हमने लास्ट 3 इयर्स का, कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड का, वैल्यू ऑफ गुड्स सोल्ड का एंड एक्सपेंडिचर इनकर्ड, रेवेन्यू एज वेल एज कैपिटल, इन तीनों का हायर, दैट इज दिस वन। सो हमारी सबसे पहली एक्टिविटी तो यही आती है, हमें क्वांटम ऑफ एक्टिविटी को फाइंड आउट करना है, और क्वांटम ऑफ एक्टिविटी इट शुड बी द एवरेज। एवरेज यदि लास्ट 3 इयर्स अवेलेबल हैं तो लास्ट 3 इयर्स का, अदरवाइज लास्ट 2 इयर्स का, अदरवाइज लास्ट ईयर का। लेकिन यदि ये ब्रांच ही लास्ट करंट ईयर में एस्टैब्लिश्ड हुई है तो करंट ईयर का की क्वांटम ऑफ एक्टिविटी वी नीड्स टू फाइंड आउट। एंड क्वांटम ऑफ एक्टिविटी का सिंपल मीनिंग हायर ऑफ 3, नंबर 1 कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड, नंबर 2 वैल्यू ऑफ गुड्स सोल्ड एंड नंबर 3 इज द टोटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड। ये चीज हमने फाइंड आउट कर ली, तो क्वांटम ऑफ एक्टिविटी हमारी आ गई 7 लाख रुपीज। आफ्टर दैट अब हमें फाइंड आउट करना है कि इसमें 7 लाख रुपीज वेदर इट इज इक्वल टू और लेस देन दो फिगर। वो दो फिगर क्या है? नंबर 1 2 lakhs, 2 lakhs is simple calculation, calculated figure, or 2% of group turnover, हेड ऑफिस प्लस ब्रांच सबके टर्नओवर मिलाकर 250 lakhs का 2%, that arrived at 5 lakhs. 2 or 5, whichever is higher, 5. Result, 7 lakh is not less than or equal to 5 lakh, no exemption. कोई एग्जम्पशन अलाउड नहीं होगी। बट इन केस यदि क्वांटम ऑफ एक्टिविटी 4 लाख होती, इन दैट केस 4 लाख इज लेस देन रुपीज 5 लाख एंड हेंस एग्जम्पशन विल बी अलाउड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल every person must try for the general exemption. जनरल एग्जम्पशन के लिए कोई एप्लीकेशन हमें किसी पर्सन को नहीं देनी पड़ती, ठीक। द थिंग एक अपने आप में क्लियर प्रोविजंस हैं बिल्कुल। अब क्वांटम ऑफ एक्टिविटीज को फाइंड आउट करो। क्वांटम ऑफ एक्टिविटीज में हायर ऑफ 3 लेंगे हम, दैट इज कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड, वैल्यू ऑफ गुड्स सोल्ड एंड एक्सपेंडिचर रेवेन्यू एज वेल एज कैपिटल, दैट इज इनकर्ड विच एवर इज हायर। और वो हायर भी हम कितने बेस पर? लास्ट 3 इयर्स के एवरेज बेसिस पर। उसके बाद इसे कंपेयर करो विद 2 लाख और 2% ऑफ द टोटल टर्नओवर ऑफ द कंपनी इंक्लूडिंग ऑल इट्स ब्रांचेस। यदि एवरेज क्वांटम ऑफ एक्टिविटी इस फिगर से हाई आ जाती है, इन दैट केस एग्जम्पशन अलाउड नहीं होगी। नाउ अब इस सीन में यदि रूल नंबर 3 की कंडीशंस पूरी नहीं है, conditions of rule number 3 is not satisfied, then we can sort for rule number 4। और rule number 4 के अंदर what we needs to do, उस केस में we have to make an application to the central government। तब हमें सेंट्रल गवर्नमेंट को एक एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, एंड सेंट्रल गवर्नमेंट हमारे सर्कमस्टांसेस को देखते हुए उसे यह लगता है कि यदि कंपनी ने एक सेटिस्फैक्ट्री अरेंजमेंट किए हुए हैं, लाइक इंटरनल ऑडिट का कंसेप्ट अप्लाई किया हुआ है, या फिर कंपनी का जो मैनेजर है, ही इज ए ब्रांच का जो मैनेजर है, ही इज ए क्वालिफाइड पर्सन, और वो पर्सन लुक आफ्टर कर रहा है वहां के अकाउंट्स को भी, एंड ही इज एन कॉम्पिटेंट वन, एंड रीजनेबल कॉस्ट पर उस एरिया में कोई लोकल पर्सन ब्रांच ऑडिट के लिए अवेलेबल नहीं होगा। इन दैट केस सेंट्रल गवर्नमेंट आफ्टर सेटिस्फाइंग इटसेल्फ इट मे ग्रांट द एग्जम्पशन, एंड दैट इज द एग्जम्पशन बेस्ड ऑन एन एप्लीकेशन। और ये एग्जम्पशन
केस टू केस डिफर करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट की ओपिनियंस पर। यदि सेंट्रल गवर्नमेंट की ओपिनियन है एग्जम्पशन ग्रांट करनी चाहिए, दे विल ग्रांट द एग्जम्पशन। इफ दे आर ऑफ द ओपिनियन no need to grant the exemption, then exemption will not be granted. That is all about our first aspect, branch audit. If you have any questions regarding the branch audits, you can message your questions. I will give reply of these questions till you can view the slides of the branch audits. मेरी फोटो लेनी नहीं, स्लाइड्स चलेंगी ना। इसका कीबोर्ड यार ऊपर आ जाएगा क्या? Now the first one aspect, that is who can be a branch auditor. Either of the three persons, the first one, the company auditor appointed under section 224, or a person who is qualified for appointment as auditor under section 226, or where the branch office is situated in a foreign country, any accountant who is duly qualified to act as an auditor under the law of the foreign country can be appointed as an auditor. That is 228 subsection 1. The rights of company auditor, that is section 228 subsection 2. In case the branch auditor, ब्रांच ऑडिट का काम कंपनी ऑडिटर ने नहीं लिया, ब्रांच ऑडिटर इज सेपरेट वन फ्रॉम द कंपनी ऑडिटर, देन इन रिलेशन टू द ब्रांच ऑडिट कंपनी ऑडिटर्स के क्या राइट हैं? कंपनी ऑडिटर्स हैज टू राइट्स. नंबर वन, ही इज एंटाइटल्ड टू विजिट द ब्रांच ऑफिस इफ ही डीम्स इट नेसेसरी टू डू सो फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ हिज ड्यूटीज एज द ऑडिटर, एंड he have a right of access at all the times to the books and the accounts of the company maintained at the branch office. But इस केस में एक exception है, and that exception is about the banking company, and that exception is कि banking company के केस में यदि foreign branch के कोई भी अकाउंट्स यदि आपको समराइज्ड वे में अवेलेबल करा दिए गए हैं, इन दैट केस कंपनी ऑडिटर डू नॉट हैव द राइट टू विजिट दैट ब्रांच. द स्टेटमेंट्स, द रिटर्न्स which is submitted by the branch to the head office, they are sufficient. Branch auditor do not have the right to visit that branch, but only and only in case of a banking company, not in case of others. Appointment of branch auditor. Appointment may be made by the members in general meeting, or member may authorize the board of directors to appoint branch auditor in consultation with the company auditor.
The next, rights and duties of branch auditor. Branch auditor have same powers and duties as the company auditor has, but he is required to forward his report to the company auditor in spite of the members of the company. Now a question arises कि what is the duration of the branch auditor? कि branch auditor का duration क्या होगा? कंपनी ऑडिटर का ड्यूरेशन तो हमने स्टडी किया है, फ्रॉम द कंक्लूजन ऑफ द मीटिंग इन विच ही इज अपॉइंटेड टिल द कंक्लूजन ऑफ नेक्स्ट एजीएम. बट इन दिस केस व्हाट विल बी द पीरियड फॉर द ब्रांच ऑडिटर? लॉ में इसके लिए कोई पीरियड स्पेसिफाइड नहीं है, बट ब्रांच ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू मेक हिज रिपोर्ट टू द कंपनी ऑडिटर सो दैट कंपनी ऑडिटर कैन सबमिट द रिपोर्ट टू द मैनेजमेंट so that it can be forwarded to the members of the company, and hence in such a case the company auditors के period के साथ साथ branch auditor का period भी specified है. So branch auditor will hold the appointment till the conclusion of the AGM in which his report, that is a part of the main report, is covered up. Remuneration. The branch auditor shall receive such remuneration and hold his appointment subject to such terms and conditions as may be fixed either by the company in general meeting or by the board of directors if so authorized by the company in general meeting. Exemption of branch audit. Exemption, section 228 subsection 4. Accordingly, central government has the power to make the rules for framing the audit exemption rules, and under 4 circumstances they may frame the rules, and accordingly they have framed branch audit exemption rules 1961. Now branch audit exemption rules, इसमें मेन 2 रूल्स हैं. वन इज रूल नंबर 3, सेकेंड वन रूल नंबर 4. रूल नंबर 3 इज कि this applies to a company which is engaged in manufacturing, processing or trading activities, provided average of quantum of activity during the 3 financial year immediately preceding the relevant financial year is less than or equal to भी साथ में आएगा इसमें, higher of ₹2 lakh or 2% of the average of total turnover of the company. But quantum of activity का मीनिंग क्या है? Quantum of activity means higher of either value of goods or services provided, or value of goods sold and services rendered, or expenditure may be revenue or capital. Now, exemption in other cases, that is rule number 4, that exemption is allowed based on an application provided central government is satisfied on any of the following grounds. Company has made the satisfactory arrangements, or branch auditor is not likely to be available at a reasonable cost, or for any other reason. Now, a few questions are there. One is कि how it will be ascertained that a person is competent to branch audit. कंपिटेंसी. कंपनी ने अपने एम्प्लॉय को ब्रांच ऑडिट के लिए लगाया और वो एम्प्लॉय लास्ट 10 इयर्स से कंपनी के अकाउंट्स मैनेज कर रहा है. कंपनी के ओपिनियन में दैट पर्सन इज एन कॉम्पिटेंट पर्सन. नाउ गवर्नमेंट की थिंकिंग, क्या वो पर्सन कॉम्पिटेंट है या नहीं है, इट डिपेंड्स अपॉन द इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी जो वो कैरी आउट करते हैं, और वो उनके अपने पैरामीटर्स हैं जिसके बेस पर दे विल डिटरमाइन द कॉम्पिटेंसी ऑफ ए पर्सन. नाउ वन थिंग कि एक चीज इन द केस ऑफ Satyam's case, which has happened recently,
and a negligence charge, it has been set by a number of peoples over their auditors. That is PwC. Now a question arise कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर मिस स्टेटमेंट्स हैं, क्या उन मिस स्टेटमेंट्स की मैटीरियलिटीज क्या है? Materiality of misstatements, that is justified, कि जो मिस स्टेटमेंट्स हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, दैट इज टू मच मटेरियल. इट इज नॉट सिंपली मटेरियल हम बात करें, दैट इज टू मच मटेरियल. यदि वो मटेरियल हैं, सो इन दैट केस इट इज ए केस ऑफ professional negligence. And if it is a case of professional negligence, it amounts to an misconduct in code of ethics. It is against basic principles. जो हमारे बेसिक प्रिंसिपल्स हैं उसके अगेंस्ट हैं प्रोफेशनल नेग्लिजेंस. सो इन सर्कमस्टांसिस में यदि ये चीज प्रूव हो जाती है, और डेफिनेटली एक चीज तो है, प्रोफेशनल नेग्लिजेंस तो है, जितनी बड़ी मैटेरियल मिस स्टेटमेंट्स हैं, ठीक, दैट इज ए प्योरली ए केस ऑफ प्रोफेशनल नेग्लिजेंस, कि जहां पर ऑडिटर ने एक चीज को वेरीफाई नहीं किया प्रॉपरली. एंड इन दैट केस अनदर थिंग मे अराइज, दे आर आल्सो दे मे बी द पार्ट ऑफ दिस फ्रॉड. और ये किन सर्कमस्टांसिस से व्यू पॉइंट हो रहा है कि ड्यूरिंग द ईयर जो पीडब्ल्यूसी को रेम्यूनरेशन दिया गया, करंट ईयर ऑडिट के लिए पीडब्ल्यूसी का रेम्यूनरेशन इट इज 3 times द रेम्यूनरेशन ऑफ द प्रीवियस ईयर ऑडिट. दैट इज अगेन ए सर्कमस्टांसिस जो इस चीज को शो कर रहा है कि पीडब्ल्यूसी मे हैव taken the money so as to hide the material misstatements. Material misstatements को show off ना करने के लिए they have taken the money. But everything depends upon the investigation, और जब तक उस investigations का result नहीं आ जाता, in that case we can't say anything. Now, two things are there. एक वर्ड है फ्रॉड, एक वर्ड है एरर. यदि हम फ्रॉड की बात करें, इंटेंशनल एरर, अनइंटेंशनल फ्रॉड, ठीक, कंसील्ड. जब एक पर्सन एक फ्रॉड को कमिट करता है तो वो उसे छुपाने की कोशिश भी करता है, लेकिन एरर अनइंटेंशनल था, सो जनरली अनकंसील्ड. ठीक, एंड चांसेस of detection फ्रॉड के केस में लोअर है, एरर के केस में हाई है. नो, इन द केस ऑफ द सत्यम इट इज क्लियर ए केस ऑफ फ्रॉड. नाउ इट हैज टू बी इन्वेस्टिगेटेड कि उस फ्रॉड में पीडब्ल्यूसी का पार्ट रोल क्या रहा है. ठीक, आज की डेट में हम अभी कुछ भी बात नहीं कर सकते. प्रोफेशनल नेग्लिजेंस जरूर है, लेकिन ऑडिटर्स की मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें, दैट इज टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन. डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड वो ऑडिटर का वर्कआउट नहीं है, लेकिन एक फ्रॉड हुआ है इतने मेजर अमाउंट का, और उसके कारण मटेरियल मिस स्टेटमेंट्स डेफिनेटली है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, जिसको डिटेक्ट करना
ठीक, दैट इज ए ड्यूटी ऑफ द ऑडिटर। ठीक, फ्रॉड को डिटेक्ट करना ऑडिटर की ड्यूटी नहीं है, बट इफ ए फ्रॉड इज देयर, उस फ्रॉड के कारण मटेरियल मिस स्टेटमेंट्स क्या हुई हैं, दैट इज द रोल ऑफ द ऑडिटर। सो इन दैट केस, अभी इस केस के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता जब तक इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशंस नहीं होती। एंड इन केस ये चीज फाइंड आउट हो जाए कि प्रोफेशनल नेग्लिजेंस है, if financial negligence is proved, then what are the consequences of the over the auditor? Number one, ICAI will take the action, और ICAI का मेन एक्शन क्या होगा? Cancel the certificate of practice. Certificate of practice may be cancelled, and in case others, गवर्नमेंट इसे अंडर कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर सीआरपीसी के अंडर ट्रीट करेगी, एंड दैट इज नॉट आवर वर्किंग सीआरपीसी की। लेकिन इंस्टीट्यूट डेफिनेटली क्या एक्शन लेगा? दे विल कैंसल द सर्टिफिकेट ऑफ द प्रैक्टिस। सो सत्यम वे केस से बाहर आकर अपने सब्जेक्ट पर आते हैं। ठीक, इनके क्वेश्चंस आर देयर। वन इज, इफ ब्रांच क्लोज इन मिड ऑफ द ईयर, देन कंडीशन इज एप्लीकेबल और नॉट। यदि ब्रांच मिडल ऑफ द ईयर में क्लोज हो जाती है, क्या ये कंडीशंस एप्लीकेबल होंगी या नहीं होंगी? इन केस ब्रांच ड्यूरिंग द ईयर क्लोज हुई, जिस ईयर में ब्रांच क्लोज हुई, लेट्स से इन द ईयर 2008-9, एंड हमारी वर्किंग जो एवरेज क्वांटम ऑफ एक्टिविटी देखते हैं, दैट इज ऑफ प्रीसीडिंग ईयर्स। वी आर टेकिंग केयर ऑफ द क्वांटम ऑफ एक्टिविटीज फॉर द प्रीसीडिंग ईयर्स, नॉट ऑफ द करंट ईयर। प्रीसीडिंग ईयर्स की एवरेज क्वांटम ऑफ एक्टिविटीज करंट में हम प्रीसीडिंग ईयर्स की उसको हम कंपेयर करते हैं विद द 2 लाख और 2% ऑफ टर्नओवर ऑफ द कंपनी, कंपनी की टोटल टर्नओवर से। यदि ये कंडीशन सेटिस्फाइड है, डज नॉट मैटर कि ब्रांच ड्यूरिंग द ईयर क्लोज हुई है, ठीक, क्लोज हुई है या नहीं हुई। कंडीशन सेटिस्फाइड, एग्जम्पशन अलाउड, कंडीशन नॉट सेटिस्फाइड, देन एग्जम्पशन नॉट अलाउड। Now, after the branch audit, our second topic of study for today is joint audit. In case of joint audit, what is the concept of joint audit? In a section 224, appointment of the company auditor, 224 subsection 1, 224 subsection 1, what it says that the company may appoint auditor or auditors. ठीक, कि कंपनी एक पर्सन को ऑडिटर अपॉइंट कर सकती है या एक से ज्यादा पर्सन को ऑडिटर अपॉइंट किया जा सकता है, एंड देन मोर देन 1 पर्सन इज अपॉइंटेड बाय द कंपनी, these persons are termed as the joint auditor. In case कंपनी एक से ज्यादा पर्सन्स को ऑडिट के लिए अपॉइंट करती है,
these persons are termed as the joint auditor. ज्वाइंट ऑडिट के अपने कुछ बेनिफिट्स है, साइमल्टेनियसली उनकी अपनी कुछ डिसएडवांटेजेस हैं. एज फार एज वी टॉक अबाउट द एडवांटेजेस ऑफ द ज्वाइंट ऑडिट, ज्वाइंट ऑडिट की एडवांटेजेस क्या होंगी? शेयरिंग ऑफ एक्सपर्टाइज. दो पर्सन्स दोनों अपने अपने फील्ड्स के एक्सपर्ट्स हैं, दे कैन शेयर देयर एक्सपर्टाइज. बिसाइड्स दिस, म्यूचुअल कंसल्टेशंस, कि यदि किसी भी एस्पेक्ट पर कोई डिस्प्यूट, कोई ठीक डाउट अराइज हो रहा है, these auditors can discuss with each other and arrived at a mutual consent. But simultaneously इन चीजों के अपने कुछ disadvantage आते हैं. There arise coordination problems, sharing of fees, इसकी प्रॉब्लम अराइज होती है. एंड कॉमन इंटरेस्ट के जो एरियाज हैं, समटाइम्स दे आर इग्नोर्ड. एक्स इज ऑफ थिंकिंग कि वाई चेक करेगा, एंड वाई इज ऑफ द थिंकिंग दैट एक्स विल चेक इट. सो इन दिस केस एक ब्रांच ज्वाइंट ऑडिट के अपने कुछ एडवांटेजेस हैं एंड साइमल्टेनियसली उनके अपने ही कुछ डिसएडवांटेजेस हैं. As far as the provisions of joint audits are concerned, joint audit के रिलेशन में one auditing and assurance standard is there, AAS-12. AAS stands for auditing and assurance standards framed by the ICAI. AAS-12, it is in relation with the responsibility of joint auditors. AAS-12, that is auditing and assurance standards. The name of the AAS-12 is responsibility of the joint auditors. ज्वाइंट ऑडिटर का मीनिंग हमने स्टडी किया. द मीनिंग इज कि जब एक से ज्यादा पर्सन्स को कंपनी ने अपने ऑर्गेनाइजेशन में ऑडिटर अपॉइंट किया है, इन दैट केस दीज पर्सन्स आर टर्म्ड एज द ज्वाइंट ऑडिटर्स. ज्वाइंट ऑडिटर्स किस तरह से वर्क को कैरी आउट करेंगे, हाउ दे विल डिवाइड देयर वर्क, किस तरह से उन्हें रिपोर्टिंग करनी है, व्हाट आर देयर कोऑर्डिनेशंस, व्हाट इज देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, दैट वी नीड्स टू कवर, एंड ऑल द प्रोविजंस दे आर डील्ड बाय द AAS-12. First one, it is division of work. Joint auditor, how they will divide their work, वो अपने वर्क को कैसे डिवाइड करते हैं. जनरली बाय म्यूचुअल डिस्कशन. एक एग्जांपल लेकर चलें. एक कंपनी एक्स लिमिटेड ने मिस्टर ए एंड मिस्टर बी, इन दो पर्सन्स को अपनी ऑर्गेनाइजेशन में एज एन ऑडिटर अपॉइंट किया. नाउ
हाउ मिस्टर ए एंड मिस्टर बी अपने वर्क को आपस में डिवाइड करेंगे। नंबर 1 ऑन म्यूचुअल डिस्कशन ऑन द बेसिस ऑफ identifiable units. Identifiable units, what it means? Identifiable units. Like, कंपनीज के 3 लोकेशंस हैं, मेन प्रिंसिपल ऑफिस, 1 कॉर्पोरेट ऑफिस, 1 ब्रांच। कंपनी ने ब्रांच ऑडिटर अलग अपॉइंट नहीं किया, सिर्फ एक्स और वाई, मिस्टर ए एंड मिस्टर बी को ऑडिटर अपॉइंट कर दिया कि ये कंपनी के जितने भी अकाउंट्स हैं, चाहे वो ब्रांच के हैं या प्रिंसिपल ऑफिस के हैं या किसी भी यूनिट के हैं, दैट नीड्स टू बी टेकन केयर बाय मिस्टर ए एंड मिस्टर बी। तो मिस्टर ए एंड बी दे मे डिसाइड अमंग देमसेल्व्स, वो अपने आप डिसाइड कर सकते हैं कि प्रिंसिपल ऑफिस के रिकॉर्ड्स अलग बने हुए हैं, आई विल चेक इट, ब्रांच के रिकॉर्ड्स मिस्टर बी चेक करेगा। म्यूचुअल डिस्कशंस बेसिस पर दे विल divide their work on the basis of identifiable unit। लेकिन सपोज सारे प्लेसेस के रिकॉर्ड एक ही जगह पर मेंटेन्ड है, आइडेंटिफाइएबल प्लेसेस पर नहीं बन रहे, अलग अलग प्लेसेस नहीं है, देन द ऑडिट मे बी डिवाइडेड हैविंग रिगार्ड टू स्पेसिफाइड एरियाज, लाइक income part I will check, expense part you will check, asset part I will check, liabilities part you will check. If identifiable units are not there, in that case the work may be divided on the basis of the specified areas or on the basis of items of income, एक्सपेंस, असेट और द लायबिलिटी। जो ये हमने डिवीजन का एक वर्क किया है, वर्क को डिवाइड किया है और जो डिसाइड किया है हमने कि ये काम ए करेगा, ये काम बी करेगा, देयर आर सम एरियाज जो कॉमन इंटरेस्ट के हैं, लाइक ऑडिट प्रोग्राम को ड्राफ्ट करना, अकाउंटिंग पॉलिसीज को चेक करना, वो वर्क दैट नीड नॉट टू बी डिवाइडेड अमंग द ए एंड बी and some areas of common interest will be taken care by both the persons. That work need not be divided. और इस तरह से जो ये चीजें फाइनल हुई हैं कि ये काम मेरा है, ये काम सेकंड पर्सन का है और ये काम हम दोनों पर्सन मिलकर करेंगे, that needs to be documented. डॉक्यूमेंटेड व्हाट इट मीन्स, एक रिटन फॉर्म में इसे कन्वर्ट करना, एंड एक कॉपी ऑफ दिस डॉक्यूमेंट नीड्स टू बी सेंट टू द मैनेजमेंट। इसकी एक कॉपी मैनेजमेंट को देंगे हम, ताकि मैनेजमेंट उसे ये चीज पता हो कि ये काम मिस्टर ए का है तो मिस्टर ए को असेस प्रोवाइड की जाए, दिस वर्क बिलोंग्स टू मिस्टर बी, असेस शुड बी गिवन टू द मिस्टर बी। सो that is about the first aspect of joint audit in relation to the division of work. There are some areas जो common है वो divide नहीं होंगे, जो areas common interest के नहीं है they are required to be divided. Division mutual consultations पर होगी और mutual consultation के बाद वो division करते वक्त हम specific units को find out करेंगे, बट यदि स्पेसिफिक और आइडेंटिफाइएबल यूनिट फाइंड आउट नहीं हो रहे हैं, देन द डिवीजन मे बी ऑन द बेसिस ऑफ आइटम्स ऑफ इनकम, एक्सपेंस, असेट और लायबिलिटीज। द नेक्स्ट पार्ट, it is about the coordinations. The auditors, दोनों joint auditors, they needs to maintain the coordinations with each other. और इस coordination में मेन चीज क्या है? Let's say ये दोनों पर्सन A and B काम कर रहे हैं। A
find some mistake belongs to the area of B. A finds a mistake belonging to the area of B, and in this case B को ये चीज पता नहीं है. What the A can do? A needs to communicate the matters to B. A को ये मैटर B को बताना चाहिए. But in case B already रिपोर्ट सबमिट कर चुका है अपनी. If B has already submitted the report, in that case, what is the duty of A? To get the transaction checked and report. It is not so कि मेरा एरिया नहीं था, बी रिपोर्ट दे दिया है, बी ने रिपोर्ट सबमिट करा दिया, आई विल नॉट चेक इट. नो. कोऑर्डिनेशन कि ए और बी आप दोनों पर्सन ऑडिटर हैं. एक बी के एरिया की एक मिस्टेक आपको पता चलती है, और यदि बी ऑलरेडी रिपोर्ट सबमिट करा चुका है, इट इज योर ड्यूटी टू गेट द ट्रांजैक्शन वेरीफाइड एंड कमेंट ओवर इट. उस केस में क्या बी रिस्पॉन्सिबल होगा? नो. यदि बी ऑलरेडी अपनी रिपोर्ट सबमिट कर चुका है, बी कैन नॉट बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर इट. रिलेशनशिप क्या है ज्वाइंट ऑडिटर्स के बीच में, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होंगी उनकी? ज्वाइंट ऑडिटर्स दे विल बी इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल ज्वाइंट ऑडिटर्स इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल होंगे उन एरियाज के लिए जो उनके अपने पर्सनल एरियाज हैं, एज पर देयर म्यूचुअल डिस्कशंस. बट दे विल बी jointly as well as individually severely responsible for common areas. जो उनके कॉमन एरियाज हैं उसके लिए these persons will be jointly responsible, like drafting of audit program to determine the nature, timing, extent of audit procedures, to verify the accounting policy, transactions of prime importance. जिन एरियाज को डिवाइड नहीं किया गया था, जो एरियाज कॉमन इंटरेस्ट के थे, दोनों ही पार्टीज को, दोनों ही ऑडिटर को चेक करना था. ठीक, दे बोथ द ज्वाइंट ऑडिटर विल बी ज्वाइंटली एंड द स्फीयरली रिस्पॉन्सिबल. इसके एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं? लाइक नेचर, timing and extent of audit procedures. कि इस ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन से ऑडिट प्रोसीजर्स फॉलो होंगे, उनकी नेचर क्या है, टाइम क्या है, एक्सटेंट क्या है, दोनों ने मिलकर डिसाइड की थी. एक प्रेजेंट सिचुएशन के अंदर ये ऑडिट प्रोसीजर अप्लाई नहीं होने चाहिए थे, रादर कोई और प्रोसीजर अप्लाई होना चाहिए था. उसके लिए दोनों पर्सन ज्वाइंटली रिस्पॉन्सिबल होंगे. देयर आर ए नंबर ऑफ पॉइंट्स जिसके लिए ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है. अकाउंटिंग पॉलिसी, क्या ऑर्गेनाइजेशन की अकाउंटिंग पॉलिसीज बेस्ड अपॉन द नेचर एंड साइज ऑफ दिस बिजनेस दे आर अप्रोप्रिएट और नॉट? दैट इज एन एरिया ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, और दोनों को मिलकर चेक करना पड़ेगा. लेकिन यदि ये चीज उन्होंने प्रॉपरली चेकआउट नहीं की, देन बोथ द पर्सन ए एज वेल एज बी बोथ आर ज्वाइंटली रिस्पॉन्सिबल फॉर इट. The next one, reporting.
as far as possible, ठीक, कॉमन रिपोर्ट आनी चाहिए ज्वाइंट ऑडिटर्स की. दे शुड अराइव एट ए कॉमन ओपिनियन एंड इशू ए सिंगल रिपोर्ट. बट if there is an disagreement in between the joint auditors, disagreement है joint auditors के बीच में, they can issue their separate report. A is agree with some affirmations but B is not agree. In that case, A can issue his separate report and B can submit his a separate report. Majority rule do not prevail. Like, 3 auditors हैं, A, B and C. A and B, they are agree, but C do not agree. C agree है मैनेजमेंट की पॉलिसी से, एफर्मेशन से, but C is not agree. As a result, क्या C is bound by the affirmations made by A and B? No. C is not bound by the affirmations made by A and B. A and B can issue their separate report and C can issue his separate report. That is about the AAS 12 responsibilities of the joint auditors. So responsibilities of the joint auditors, 4 मेन पार्ट्स के अंदर हमें इस चीज को कवर अप करना है. नंबर 1 पार्ट इज डिवीजन ऑफ वर्क. डिवीजन ऑफ वर्क में कुछ नॉर्मल पॉइंट्स आते हैं. दीज पॉइंट्स आर, नंबर 1, वर्क should be divided by the auditors on mutual discussion basis, and the areas, it is in the terms of identifiable or the specified areas. But if due to the nature of the business, specified areas cannot be detected, in that case the division of work may be with reference to the assets, liabilities, income or the expenditures. Some areas which are of common interest, they need not be divided among the auditors, and the work that has been carried out, कि जिस वर्क को हम करेंगे या दूसरा पर्सन करेगा, ये वर्क ज्वाइंट होंगे, in that case that things needs to be documented and submitted to the management. As far as communication part is concerned, coordination part is concerned, यदि किसी भी एरियाज में हम मिस्टेक फाइंड आउट करते हैं जो हमारे एरियाज को बिलोंग नहीं करता, वी हैव ए रिस्पॉन्सिबिलिटी, और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? टू स्पेसिफाई दैट मिस्टेक टू द पर्सन जिसके एरिया को ये बिलोंग करता है, बट प्रायर टू द सबमिशन ऑफ रिपोर्ट बाय दैट पर्सन. रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज, एक मिस्टेक जो फाइंड आउट हुई है कॉमन एरियाज की है, बोथ पर्सन्स आर ज्वाइंटली रिस्पॉन्सिबल, उनके सेपरेट एरियाज की हैं, दे विल बी इंडिविजुअली हेल्ड रिस्पॉन्सिबल. द लास्ट वन, रिपोर्टिंग, नॉर्मली दे फॉर्म ए कॉमन ओपिनियंस, बट समटाइम्स जब कॉमन ओपिनियन नहीं ड्राफ्ट हो रही है, दे कैन इशू देयर डिफरेंट ओपिनियंस. दैट इज अबाउट द कंसेप्ट ऑफ द ज्वाइंट ऑडिट. Break is demanded by the Gorakhpur and the Ludhiana a number of times. We take a short break on only 5 minutes, and after that we will carry out the special audits and the cost audit concepts.
till now we have covered the two topics. One is branch audit and second one is the joint audit. The main provision in relations to the branch audit, they were covered by section 228 and companies branch audit exemption rules 1961. As far as joint audit is concerned, the major principle over the joint audit is AAS 12, that is responsibility of joint auditors. Now after this, our two topics for today is special audit and another is cost audit. The relevant provisions of law covering these two aspects, one is special audit and second one cost audit, that is section 233A of the Companies Act and section 233B of the Companies Act. We start with the section 233A. It is about the special audit. 233A provides that if the central government is of the opinion that state of affairs, जो कंपनीज की एक्टिविटीज चल रही हैं, कंपनी के स्टेट ऑफ अफेयर्स हैं, दे आर नॉट एज पर साउंड बिजनेस प्रिंसिपल्स, जो बिजनेस के साउंड प्रिंसिपल्स है उन पर नहीं है, बेस्ड नहीं है, द डिसीजंस taken by the management are such so as to endanger the solvency of the company. Endanger the solvency means कि कंपनी को इंसॉल्वेंट्स की कैटेगरीज पर लेकर के जा रहे हैं, ठीक, कंपनी की रीपेमेंट कैपेसिटी को कम कर रहे हैं. इन दीज सर्कमस्टांसेस, and one more, any activities of the companies are such so as to give harm to the trade or industry to which they belongs. Like एक कंपनीज की एक्टिविटीज इस तरह से चल रही है so as to harm the trade, commerce, industry जिसको वो बिलोंग करती है. इन सच सर्कमस्टांसेस वी कैन से सेंट्रल गवर्नमेंट में ऑर्डर फॉर द स्पेशल ऑडिट. दैट इज कि अंडर द थ्री सर्कमस्टांसेस, वन, अफेयर्स ऑफ द कंपनी आर नॉट बीइंग मैनेज्ड इन अकॉर्डेंस विद द साउंड बिजनेस प्रिंसिपल्स. ठीक. नंबर टू, दैट company's activities are such so as to endanger the solvency of the company, and third, company's activities are such so as to harm the interests of the trade, industry, commerce जिसको वो belong करती है. इन circumstances में central government may direct for the special audits for the period specified in the order. That may be 1 year audit, that may be 2 years. कितने periods के लिए
स्पेशल ऑडिट कंडक्ट की जाएगी, दैट विल बी स्पेसिफाइड in the direction which is given by the central government. The most important thing about the special audit is who can conduct the special audit. Special auditor. Either a chartered accountant or the company auditor himself. And main thing is that chartered accountant does not require to have certificate of practice. That means any chartered accountant may have the certificate of practice or may not have the certificate of practice, can be appointed by the central government to work as the special auditor. स्पेशल ऑडिटर्स के राइट्स एंड ड्यूटीज, स्पेशल ऑडिटर्स के क्या राइट्स होंगे, क्या उनकी ड्यूटीज होंगी, दे विल बी सेम एज दैट ऑफ कंपनी ऑडिटर. जो कंपनी ऑडिटर्स के राइट्स हैं, ड्यूटीज हैं, वही सारे राइट्स और ड्यूटीज स्पेशल ऑडिटर के भी हैं, in addition to that which is specified by the government. यदि गवर्नमेंट ने स्पेशली उसको कोई और ड्यूटी असाइन की है that needs to be performed, और उस ड्यूटी को परफॉर्म करने के लिए गवर्नमेंट ने कोई और राइट उसे दिया है, that can be exercised. स्पेशल ऑडिटर का रेम्यूनरेशन it will be fixed by the central government but payable by the company. Remuneration will be paid by the company but it will be fixed by the central government. Now, special audit report. स्पेशल ऑडिट रिपोर्ट किस पर्सन को सबमिट की जाएगी? जनरल रिपोर्ट इज सबमिटेड टू द मेंबर्स ऑफ द कंपनी, बट special auditor is appointed in the special circumstances by the central government, and hence the special audit report is required to be submitted to the central government within the period specified by the government in its order. जितना पीरियड गवर्नमेंट ने स्पेसिफाइड किया है अपने ऑर्डर में, उतने पीरियड के अंदर अंदर स्पेशल ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू सबमिट हिज रिपोर्ट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट. एंड इस रिपोर्ट के बेसिस पर गवर्नमेंट दे मे टेक एनी एक्शन अगेंस्ट द कंपनी, बट इफ गवर्नमेंट डज नॉट एक्ट within 4 months, ऑडिट रिपोर्ट रिसीव्ड होने के 4 months के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट डज नॉट टेक एनी एक्शन, इन दैट केस द गवर्नमेंट विल फॉरवर्ड द रिपोर्ट टू द कंपनी. गवर्नमेंट इस रिपोर्ट को फॉरवर्ड करेगी कंपनी को, and company either circulate it among the members or get it read in the meeting. कंपनी इसकी एक कॉपी सर्कुलेट करेगी among the members of the company और get the report read out in the meetings. That is about the concept of special audit covered by section 233A. Refer page number 188 of the notes. 188 पेज नंबर पे स्पेशल ऑडिट के प्रोविजंस गिवन है हमें. एज पर सेक्शन 233A, the first one point is कि where the central government is of the opinion that
affairs of any company are not being managed in accordance with sound business principles, or any company is managed in a manner likely to cause injury or damage to the interests of trade, industry or business to which it belongs, or financial position of the company is such so as to endanger its solvency. तो ये पॉइंट कंपनीज के उन सर्कमस्टांसिस को शो करता है जिन सर्कमस्टांसिस में सेंट्रल गवर्नमेंट में इशू ए डायरेक्शन टू कैरी आउट द ऑडिट. कितने पीरियड के लिए? पैराग्राफ बिलो, द सेंट्रल गवर्नमेंट मे एट एनी टाइम बाय ऑर्डर डायरेक्ट दैट a special audit of the company account for such period or periods as may be specified in the order. So period is specified in the order itself. Now, who can be the special auditor? Either of two. Number one, a person who is a chartered accountant, or the company auditor himself can work as the special auditor provided सेंट्रल गवर्नमेंट सो अपॉइंट. यदि सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है तो कंपनी ऑडिटर हिमसेल्फ कैन वर्क एज द स्पेशल ऑडिटर. लेकिन जो इसका सबसे मेन प्रोविजन है, एनी अदर चार्टर्ड अकाउंटेंट, एंड इट डज नॉट मैटर दैट ही हैव ए सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस और नॉट. रेफर पॉइंट नंबर बी ऑन पेज नंबर 188. फॉर दिस पर्पस central government may appoint either a chartered accountant whether or not he is in practice. That is the most important line, कि whether or not he is in practice. जो हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं उनमें 2 मार्क्स के अंदर दिस क्वेश्चन बिकम्स ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि whether a chartered accountant who is not holding a certificate of practice can be appointed as a special auditor. Yes, आंसर, ठीक, आंसर क्या आएगा? यस, ही कैन बी अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर बिकॉज सेक्शन 233A प्रोवाइड्स इट. स्पेशल ऑडिटर्स की पावर्स, ड्यूटीज, दे आर द सेम एज कवर्ड बाय सेक्शन 227 फॉर ए कंपनी ऑडिटर. बट व्हाट इज सेपरेट? द स्पेशल ऑडिटर विल सबमिट हिज रिपोर्ट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, whereas a company auditor submits the report to the members of the company. That is a basic difference, कि एक स्पेशल ऑडिटर अपनी रिपोर्ट को सबमिट करता है टू द सेंट्रल गवर्नमेंट who has to comment over it, whereas a company auditor submits the report to the members. Now, after getting the audit report received, what is the duty of the government? They may specify any action which is required to be taken by the company, but if they does not specify any action, they are required to issue the report, forward the report within a period of 4 months to the company, and in that case, company is required to circulate a copy of that report among the members or get the report read out in the meetings. That is point number C and D. C point, the special auditor shall have the same powers and duties in relation on the special audit as an auditor of company has under section 227, except he report to the central government in place of members of the company. And on receipt of the order, the central government may take such action as circumstances might warrant. In case the government does not take any action within a period of 4 months from the receipt of the report, it must send the report to the company either दो पर्पस के लिए, to circulate the copy among the members or to get it read before the company in its general meetings. That is about the concept of the special audit. Whether the special audit can be ordered by the central government in case of the Satyam? Yes, answer is right. Yes, central government can direct for a special audit.
लेकिन अभी तक ऐसा कोई सिचुएशन अराइज नहीं हुई है। द रेगुलेटरी एजेंसीज जितनी भी हैं, दे आर टेकिंग केयर ऑफ द मैटर्स। नाउ द नेक्स्ट एस्पेक्ट, इट इज अबाउट कॉस्ट ऑडिट, covered by section 233B. Now, under section 233B, who can be the cost auditor? What are the conditions for the cost audit? Number 1, circumstances demanding cost audit. दो कंडीशंस, नंबर 1, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर्स फॉर द ऑडिट ऑफ सच कंपनीज। सेंट्रल गवर्नमेंट ने इन कंपनीज की कॉस्ट ऑडिट के लिए ऑर्डर इशू किया है। एंड नंबर 2, such companies maintains the records required under section 209 subsection 1 clause D। सेक्शन 209 सबसेक्शन 1 क्लॉज डी के अंदर इन कंपनीज को रिकॉर्ड्स मेंटेन करना कंपलसरी था, और वो रिकॉर्ड्स हैं इन रिलेशन टू कॉस्ट अकाउंटिंग, मटेरियल कंजप्शन, लेबर यूटिलाइजेशन, इनकरेंस ऑफ अदर एक्सपेंसेस। सो जब ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होती है, नंबर 1, central government has issued a direction to get the cost accounts audited, and number 2, the company has maintained the records required under section 209 subsection 1 clause D, then audit of the cost accounts becomes compulsory. Second aspect आता है, who can carry out the cost audit? कॉस्ट ऑडिट कौन कर सकता है? Who can be the cost auditor? A cost accountant means a member of ICWAI, Institute of Cost and Works Accountants of India, can carry out the cost audit, but or a chartered accountant, if central government is of the opinion that sufficient number of cost accountants are not available. If the central government is of the opinion that sufficient number of the cost accountants are not available, in that case, central government may direct that cost audit may be conducted by an chartered accountant. That is about the second requirement, who can carry out the cost audit. Either a cost accountant or a chartered accountant. Number 3, अपॉइंटमेंट। कॉस्ट ऑडिटर की अपॉइंटमेंट कौन करेगा? कॉस्ट ऑडिटर will be appointed by
board of directors. Cost auditor की appointment, it is through the board of director after getting previous approval from the central government. Central government से previous approval के बाद the appointment will be made by the board of directors. Rights and duties. The rights and duties of the cost auditors, they are same as the company auditor has under section 227. जो rights company auditors के हैं under section 227, वही same rights एक cost auditor के भी हैं, that is under section 233B. Remuneration will be fixed by the board of directors. Audit report किसे submit होगी? The audit report of the cost audit will be submitted to the board of directors. Board of directors company को forward होगी and within a period of 30 days, 30 days के अंदर जब ये रिपोर्ट मिली है कंपनी को, इस रिपोर्ट में कोई भी नेगेटिव या रिवर्स रिमार्क है या कोई भी क्वालिफिकेशन गिवन है, कंपनी को उसके ऊपर अपने रिमार्क्स सेंट्रल गवर्नमेंट के पास सबमिट करने हैं कि एनी रिमार्क, एनी ऑब्जर्वेशन, एनी क्वालिफिकेशन that has been framed by the cost auditor in his audit report, the company is required to give their comment on these remarks within a period of 30 days to the central government. That is the requirement of cost audit. Cost audit और financial audit, इन दोनों के बीच में आपस की रिलेशनशिप क्या है? फाइनेंशियल ऑडिट के अंदर हमने एक एस्पेक्ट स्टडी किया था कारो का. Under the provisions of the CARO, a statutory auditor is required to report, and that reporting is on a matter कि whether the cost accounting records has been maintained or not. And in that case, simple एक opinion हमें reflect करनी थी कि cost accounting records बनाए गए हैं या नहीं बनाए गए, उनके ऊपर कि whether these records एक complete detail को ले रहा है या नहीं, recording proper है या नहीं, that is a part of the cost audit and will be checked by the cost auditor. So it is about the cost audit. Refer page number 189 in the notes. Page number 189. That is, cost audit is covered by section 233B. First one provision, the central government may by order direct that audit of cost accounts of a company shall be conducted in a manner as may be specified in the order either by a cost accountant, and if central government is of the opinion that sufficient number of cost accountants are not available, then chartered accountant holding certificate of practice may be offered the cost audit. The cost auditor will be appointed by the board of directors with the previous approval of the central government. C point, an important point. क्या सीलिंग ऑन नंबर ऑफ लिमिट के प्रोविजन कॉस्ट ऑडिट पर भी अप्लाई होते हैं? आंसर इज यस. 224 सबसेक्शन 1B के प्रोविजन टू गेट ए रिटन सर्टिफिकेट फ्रॉम द पर्सन दैट ही is eligible to accept this audit, and after accepting this audit, the total number of the audit will not exceed the specified number. And cost audit, it is in addition to the audit required under section 224. इसका मीनिंग कि यदि एक पर्सन ने 224 की ऑडिट कराई है कंपनी ने, whether they can deny for cost audit कि हमारी cost audit की जरूरत नहीं है? No. Cost audit is a separate audit in addition to the audit required under section 224. Powers and duties, E point, a cost auditor have the same powers and duties as that of a
statutory auditor, but he will make his report to the company as well as to the central government. और कंपनी को क्या करना है, रिपोर्ट रिसीव्ड होने के 30 डेज के अंदर अंदर जितने भी एडवर्स या नेगेटिव रिमार्क्स हैं उनके ऊपर रिपोर्टिंग करनी है टू द सेंट्रल गवर्नमेंट. F point, the company shall within 30 days from the receipt of a copy of the report furnish the central government with full information and the explanation on every reservation and qualifications contained in such report. And in relation to cost audit, the central government has issued cost audit report rule specifying किस फॉर्म में वो ऑडिट रिपोर्ट होंगी और उसमें क्या क्या इंफॉर्मेशन इंक्लूड करनी है. स्टैट्यूटरी ऑडिटर की रिक्वायरमेंट, स्टैट्यूटरी ऑडिटर अंडर सेक्शन 2091D में जो रिकॉर्ड्स मेंटेन होते हैं उनके ऊपर उसे रिपोर्टिंग करनी है अंडर द प्रोविजंस ऑफ द कारो. दैट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द कॉस्ट ऑडिट अंडर सेक्शन 233B. One last topic of this chapter is statutory report. Earlier we have covered that in a company दो मेन टाइप्स की मीटिंग्स होती हैं. मीटिंग्स, वन इज जनरल मीटिंग्स, second one is board meetings. General meeting is the meeting of the members of the company and generally of three types. Number one, statutory meeting. Number two, annual general meeting. And number three is the extraordinary general meeting. Statutory meeting. It is the first general meeting. ये कंपनी की फर्स्ट जनरल मीटिंग होती है जो आफ्टर 30 डेज बट बिफोर 6 months ऑफ द डेट when the company is entitled to commence the business needs to be done. Statutory meeting कंपनी कि उस डेट को, जिस डेट को वो एंटाइटल्ड हुई थी टू कमेंस इट्स बिजनेस, उसके 30 डेज के बाद बट बिफोर 6 months एक मीटिंग को करना होता है. दैट मीटिंग इज एन स्टैट्यूटरी मीटिंग, फर्स्ट मीटिंग. और इस मीटिंग से पहले, स्टैट्यूटरी मीटिंग से पहले, स्टैट्यूटरी मीटिंग के नोटिस के साथ कंपनी को एक स्टैट्यूटरी रिपोर्ट भेजनी पड़ती है टू एवरी मेंबर ऑफ द कंपनी. और उस रिपोर्ट के अंदर कंपनी अपनी प्रिलिमिनरी वर्किंग के बारे में बताती है सारा कुछ, कि हमने कितने शेयर्स इशूड किए हैं, कितने कैश पर हैं, कितने कंसीडरेशन पर हैं. जो कैश पर हैं उनमें कितना कैश आ चुका है, कितना कैश अभी आना बाकी है, कंपनी ने कितने प्रिलिमिनरी एक्सपेंस इनकर्ड किए हैं, कंपनी ने किन अंडरराइटर्स को अपॉइंट किया था और उन अंडरराइटर्स को कितनी अंडरराइटिंग कमीशन दी गई है, और यदि किसी अंडरराइटर ने अपनी ऑब्लिगेशन को पूरा नहीं किया तो उसके क्या रीजंस हैं. कंपनी के ऑफिसर्स मींस डायरेक्टर्स, सेक्रेटरी, मैनेजर्स कौन कौन अपॉइंट हुए हैं, उनकी क्वालिफिकेशन क्या है, उनकी डिसक्वालिफिकेशन, उनकी क्वालिफिकेशंस क्या हैं, उनके नेम क्या हैं और उनके एड्रेसेस क्या हैं. बिसाइड्स दिस the other things, out of which one, एक कैश एब्स्ट्रैक्ट. एक कैश एब्स्ट्रैक्ट मीन्स कि कंपनी के कमेंस होने से, स्टार्ट होने से लेकर आज तक कितना कंपनी ने कैश रिसीव्ड किया है और कंपनी ने कितना कैश पे किया है, उन सब की रिपोर्ट हमें बनानी पड़ती है. और ये रिपोर्ट कंपनी एवरी मेंबर को भेजती है, जिसे स्टैट्यूटरी मीटिंग का नोटिस दिया जाता है. दैट मीटिंग इज रिक्वायर्ड टू बी साइंड बाय at least 2 directors of the company. कंपनी के 2 डायरेक्टर इस रिपोर्ट को साइन करते हैं.
जिसमें से एक मैनेजिंग डायरेक्टर होगा इफ देयर इज एनी, कोई मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं है बाय एनी टू डायरेक्टर्स, साइमल्टेनियसली दो चीजों के ऊपर, वन इज शेयर्स एंड नंबर टू कैश अकाउंट, उसके ऊपर सिग्नेचर ऑडिटर के भी होते हैं। दैट इज द रिक्वायरमेंट्स ऑफ स्टैट्यूटरी रिपोर्ट। ऑडिट के अंदर ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कंपनी लॉ के पेपर में दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि व्हाट आर द कंटेंट्स ऑफ ए स्टैट्यूटरी रिपोर्ट एंड हु शुड साइन द स्टैट्यूटरी रिपोर्ट। ऑडिट के पेपर में शायद रेयरली ही ये क्वेश्चन कभी आया हो, बट दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द कॉर्पोरेट लॉज पेपर्स। पेज नंबर 189 पर सबसे लास्ट में ये टॉपिक गिवन है, दैट इज स्टैट्यूटरी रिपोर्ट। रिक्वायरमेंट अंडर सेक्शन 165, किन कंपनीज को ये स्टैट्यूटरी मीटिंग करनी है? एवरी पब्लिक कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, limited by guarantee and having share capital has to hold a statutory meeting within a period of not less than 1 month and not more than 6 months from the date when the company is entitled to commence the business. And the statutory report must set out the following matters. Number 1, shares allotting, distinguishing them as fully paid, partly paid, for cash, for consideration other than cash. Second one, total amount of cash received by the company in respect of the shares which are allotted for cash. Number 3, an abstract of receipt and payment account of the company. जो कंपनी का रिसीट एंड पेमेंट है उसके बारे में. Number 4, name, address, occupation of Director, Auditor, Manager, Secretary of the company. Particulars of any contract जो इस मीटिंग में डिस्कस होगा. Extent, underwriting contract की if it is not carried out. Arrear जो due है from the directors of the company or the managers of the company. The amount of any commission or the brokerage which is paid to the directors of the company. Commission or brokerage that is paid to the director. The word is directors to the company. It must be certified by at least 2 directors, one of whom shall be the managing director if there is any, and simultaneously as far as cash abstract and shares allotted are concerned, it also requires authentication by the auditor of the company. That is all about this chapter. इस chapter में जो main provisions covered हुए हैं, that is about the branch audit, joint audit, special audit and the cost audit and last statutory reports. इसके questions we see page number 190 पर question number 1. As an auditor, comment on the following. You are a principal auditor of Shri Company Limited, which has 3 branches, the accounts of which are subject to audit by the qualified branch auditor. One of the branch auditor qualified his report. Branch auditor ने अपनी report को qualified किया है for non-provision of doubtful debt, which he considered to be material for the company as a whole. ब्रांच ऑडिटर की रिपोर्ट क्वालिफाइड रिपोर्ट है. नाउ ब्रांच ऑडिट की रिपोर्ट में हम क्या करते हैं? ब्रांच ऑडिट की रिपोर्ट ब्रांच ऑडिटर सबमिट कराता है टू हुम? टू द कंपनी ऑडिटर. और कंपनी ऑडिटर की ड्यूटी बनती है टू इंक्लूड द मैटर्स ऑफ द ब्रांच ऑडिट रिपोर्ट इन हिज मेन रिपोर्ट. मेन रिपोर्ट सिर्फ एक सबमिट होती है. फर्दर क्वेश्चन इज, subsequent to their reporting, but before you could sign the audit report, the management informed you that the debt under the subject matter of qualification had been fully covered. Now, the question is कि ब्रांच ऑडिटर ने अपनी रिपोर्ट को क्वालिफाइड किया. यदि हम इस क्वेश्चन को एनालाइज करें स्टेप बाय स्टेप, branch auditor qualifies the report. Management
क्वालिफाई द रिपोर्ट किसके कारण? नॉन प्रोविजन ऑफ डेप्ट, डाउटफुल डेप्ट के ऊपर प्रोविजन नहीं बनाया गया, बट नाउ द मैनेजमेंट इज सेज डेप्ट इज रिकवर्ड, कि डेप्ट की रिकवरी हो चुकी है, एंड डेप्ट की रिकवरी हो चुकी है तो क्या इस प्रोविजन की कोई रिक्वायरमेंट है? नो रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रोविजन इज देयर। What the company auditor should done? इस केस में कंपनी ऑडिटर को क्या करना चाहिए? नो डिस्क्लोजर अबाउट दिस प्रोविजन इज रिक्वायर्ड। यदि कंपनी ऑडिटर को यह चीज लगती है कि जो मैनेजमेंट ने असर्शन दी है कि डेप्ट इज रिकवर्ड, डेप्ट रिकवर्ड हो चुका है, तो उसे इस डेप्ट को इस क्वालिफिकेशन के साथ चेकआउट करना चाहिए, एंड हेंस इफ ही इज सेटिस्फाइड, यदि वो सेटिस्फाइड है, इन दैट केस नो डिस्क्लोजर इज रिक्वायर्ड, किसी भी डिस्क्लोजर की रिक्वायरमेंट नहीं है, बिकॉज अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी to frame the opinion on the company account, including the branch, is of the company auditor. Company auditor is main responsible for the accounts of the company, including its branches. Branch की रिपोर्ट कभी भी ऑडिट रिपोर्ट के साथ अलग से नहीं लगाई जाती. It is the company auditor who has to deal with the branch audit report. Question number 2. Page number 191. Comment on the following. Messrs. Seaman and Company had been the company auditor for Amudhan Company Limited for the year 67. The company had 3 branches located at Chennai, Delhi and Mumbai. The audit of branches Chennai and Delhi looked by the company auditor themselves. The audit of Mumbai branch has been done by another auditor, Messrs. Vasan and Company, a local auditor. Branch auditor had completed the audit and given the report. After this, but before finalization, company auditor wants to visit the Mumbai branch and have access to inventory record maintained at the branch. Management objects to this. No. Management cannot object to this, reason being the section 228 subsection 2. Section 228 subsection 2, it is the right of company auditor. In relation to the branch audit, ब्रांच ऑडिट के रिलेशन में द कंपनी ऑडिटर के क्या राइट्स हैं? ही हैज ए राइट टू विजिट द ब्रांच. डज नॉट मैटर कि ऑडिट रिपोर्ट सबमिट हो चुकी है, ठीक, ब्रांच ऑडिटर के राइट्स रिमेन्स, कंपनी ऑडिटर के राइट्स रिमेन्स, एंड ही कैन विजिट द ब्रांच ऑफिस टू चेक द जेन्युइननेस ऑफ द ब्रांच ऑडिट रिपोर्ट. बिकॉज आंसर इज सेम. The ultimate responsibility for framing an opinion on the company's account is of the company auditor. Next, question number 3. E and S, they were appointed as joint auditor of X and Y Limited. What will be their professional responsibility in a case where the company has cleverly concealed certain transactions that escaped the notice of both the auditors? दोनों ऑडिटर्स के पास से कोई भी मैटर एस्केप कर गया, एंड दैट इज एन इंपॉर्टेंट मैटर. तो रिस्पॉन्सिबिलिटी एक सिंगल ऑडिटर की आएगी या ज्वाइंट ऑडिटर की आएंगी? दोनों की. इट इज ऑफ द ज्वाइंट ऑडिटर. AAS 12 it simply says कि ज्वाइंट ऑडिटर्स आर रिस्पॉन्सिबल ज्वाइंटली एज वेल एज फेयरली
for the matters of the professional negligence. Question number 4. State the circumstances under which the special audit may be called. 3 circumstances. Number 1, where the state of affairs are being conducted in a manner which is prejudicial to the interests of the companies or against prudent accounting principles or prudent business policies. Second one, the activities or the decisions taken by the companies are such so as to endanger the solvency of the company. And third, the decisions are such so as to cause a harm or damage to the trade industry to which this business belongs. Question number 5. The central government has appointed Mr. Sushil, a retired finance director, a non-practicing member of ICAI, as a special auditor on the ground that company was not being managed on sound business principle. Mr. Ajay, MD of MM Limited, feels that appointment of Mr. Sushil is not valid as he does not hold a certificate of practice. Yes, the contention of MD is not correct because section 233A allow a chartered accountant to work as a special auditor. Does not matter that he does not hold the certificate of practice. Any chartered accountant can be appointed as the special auditor, and hence appointment of Mr. Sushil held to be an valid appointment. आगे just theory के question है, write short note on cost audit, write short note on statutory report of a public company. This is all about this chapter, and we conclude this chapter number 7, ठीक, जिसके अंदर मेन कंपनी ऑडिटर को हमने स्टडी किया. कंपनी ऑडिट से रिलेटेड जितने भी हमारे लीगल प्रोविजंस थे, लाइक उसकी अपॉइंटमेंट, रिमूवल, क्वालिफिकेशन, डिस्क्वालिफिकेशन, ऑडिट रिपोर्ट्स, पावर्स, ड्यूटीज, कारो प्रोविजंस, ब्रांच ऑडिट, ज्वाइंट ऑडिट, स्पेशल ऑडिट, कॉस्ट ऑडिट, all we have covered up, ठीक? And this part constitutes near about 20 to 25% of your syllabus. After this, we will start the chapter number 1 from the next lecture. Now the questions that has been asked is, May 2008, Caro 2004 is also applicable to the audit of a branch. Whether the provisions of Caro 2004 is also applicable to a branch? Answer is yes. Provision of Caro is also applicable over a branch. Yes, from the Kanpur, please raise your query. One query is from the Kanpur. Next class time. Next class will be held at the 7 a.m. on the Sunday. In case of foreign branch audit, while calculating the quantum of activity, what exchange rate will be taken, either TT buying or selling? In case of a foreign branch, we are required to carry out the audit of those financial statements which has already been translated into the Indian rupees. जो हमें transactions मिलेंगी, that will be of the Indian rupees. As an auditor, we are not concerned for the translation of it. Translation, that is the requirement of the management. They have to take care about this. What is the relevance of AAS 19 in question number 1? AAS 19 that belongs to the subsequent events. Question number 1 जो पेज नंबर 190 पर गिवन है, इस केस में यह है कि ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करने के बाद यदि कोई भी ऐसा इवेंट अराइज होता है जिसके बारे में आप मेंबर्स को बताना चाहते हैं, दैट इज टर्म्ड एज एन सब्सिक्वेंट इवेंट. जैसे AS4 के अंदर है इवेंट्स अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट. ऑन द सेम बेसिस वन इवेंट इज देयर that is in the audit covered by AAS 19 subsequent event. We will cover this aspect in the auditing and assurance standard in detail.
What is meant by jointly and severally liability? Joint and sever means the persons are jointly liable as well as individually liable. यदि लाइबिलिटी एक पर्सन से रिकवर करनी है और एक पर्सन से रिकवर नहीं की जा रही है, देन दैट लाइबिलिटी कैन बी इम्पोज्ड ऑन द अनदर आल्सो. इंडिविजुअल लाइबिलिटीज वो हैं कि जो सिर्फ ए पर इम्पोज की जा सकती हैं, बी पर इम्पोज नहीं की जा सकती. ज्वाइंटली एंड स्फीयरली लाइबिलिटी ए पर भी इम्पोज की जा सकती हैं, बी पर भी इम्पोज की जा सकती है, किसी पर भी इम्पोज की जा सकती है. If the auditor is not provided with the real minute book, but a draft minute book is provided, whether he needs to accept it, it depends upon the professional judgment. उसे ये लगता है कि प्रेजेंट सर्कमस्टांसिस में ओरिजिनल मिनट्स बुक्स की अवेलेबिलिटी नहीं हो रही है एंड मैनेजमेंट इज जस्टिफाइड ऑन दिस पार्ट, he may accept the draft minutes books, but he may mention that point in his audit report. In case the management makes default in providing information as required by the special auditor, what are the consequences? यदि मैनेजमेंट स्पेशल ऑडिटर को रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन नहीं देती है, इन दैट केस स्पेशल ऑडिटर कैन इशू ए डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन एंड penal action may be imposed by the central government in these cases, because special auditor is appointed by the central government. If the books are concealed, that means books ही provide नहीं की गई, then auditor can issue a disclaimer of opinion. What is a reasonable cost in case of a branch audit? Reasonable cost means the expense which can be incurred on the branch audit considering the activities that is carried out in the business. That may be 5,000, maybe 10,000 depending upon the branch profitabilities. Okay, we are concluding the chapter for today right now, and from the next lecture we will start the first chapter of the audit, that is nature of auditing.